So last time we discussed some basics of atomic structure. What is the structure of an atom? How do you define the atom as the the smallest particle of a matter that makes up a matter? And then we also talked about that what makes up an atom. There are three types of subatomic particles. Subatomic का मतलब atom के भी अंदर subatomic particles तीन types के होते हैं, in which we discussed about protons, neutrons, and electrons. So if we talk about the basic definitions and the structure of atoms, atom is what? It is the smallest particle of an element that consists of electrons surrounding a nucleus that contains protons and neutrons. And a molecule is a different. Molecule होता है जब दो atoms combine करते हैं. Atom क्या हो गया? Atom है जी कि you have a nucleus, ठीक है? And I'll check the color of the pen as well. Okay, so atom hai, it's a nucleus. The nucleus contains two things, the protons and the neutrons. So the nucleus is made up of the protons and neutrons, and surrounding the nucleus, we have the negatively charged electrons over here. Okay, we have the negatively charged electrons. So these are the three types of subatomic particles. जिसमें जो protons and neutrons and they are present inside the nucleus, and the nucleus has an overall positive charge due to the protons. Neutrons का तो zero charge होता है. And surrounding the nucleus we have these light particles, and they're like 2000 times smaller than protons and neutrons almost. ये surround करते हैं in orbit. तो ये है smallest particle of an element. Whereas a molecule on the other hand is a group of two or more atoms chemically joined together. अब periodic table जो हमारा next chapter भी है, in periodic table आपको जितने elements नजर आ रहे हैं, there are about how many elements in the periodic table? 118 till now, till date, जो अभी तक elements हैं, the official ones. We have 118 elements to be known, and all of those elements that you see in the periodic table वो भी इस वक्त किस फॉर्म में है? एटम की फॉर्म में है. दे आर ऑल इन देयर एटम फॉर्म. अब उनमें से अगर कोई दो कंबाइन कर जाते हैं, दे मेक अप अ मॉलिक्यूल, because a molecule is a group of two more atoms chemically joined together, forming an identifiable unit which retains the properties and composition of the substance. For example, कैल्शियम एक एटम है और ऑक्सीजन एक एटम है. अगर ये दोनों एटम्स कंबाइन कर जाते हैं, दे मेक अप अ मॉलिक्यूल नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड. Is the difference between atoms and molecules clear? Got it? Yes. Yes, Mipsam, do you want to say anything? Sir, it's here. Okay, good job, good job. Elements are made up of tiny particles called atoms. Each atom is made up of subatomic particles called the protons, neutrons, and electrons. जिसमें से जो protons and they are positively charged, neutrons are neutral, and electrons are negatively charged. Their size is so tiny that we can't really compare their masses in conventional units such as kilograms or grams. So we use a unit called the relative atomic mass. AMU. अब जाहिर सी बात है, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को या एटम्स को केजीज में या फिर ग्राम्स में, किलोग्राम्स, इसमें तो मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत लाइट आएगा ना मैथ. तो इनके लिए एक सेपरेट यूनिट है. वी कॉल इट एज द एटॉमिक मास यूनिट, AMU. एटॉमिक मास यूनिट इज यूज्ड फॉर दीज. एंड अकॉर्डिंग टू दिस एटॉमिक मास यूनिट, आपके पास डेफिनेशन होती है दैट यू हैव टू मेमोराइज. वो क्या डेफिनेशन है? that one relative atomic mass unit is equal to the mass of a carbon 12 atom. This is the exact definition that you guys have to memorize. अगर आप हर चीज को लेते हो तो वो हम एज कार्बन 12 के साथ स्टैंडर्ड लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन 12 हैज अ मास ऑफ 12. अब वन कार्बन के बदले आपके पास जब 12 हाइड्रोजन्स होंगे, दे वुड बी इक्वल टू वन कार्बन. या अगर आपने लेना है फॉर एग्जाम्पल हीलियम पार्टिकल्स, कितने होंगे कि वो इक्वल होंगे किसके? एग्जैक्टली कार्बन के. तो यू वुड नीड लाइक 3 हीलियम पार्टिकल्स टू मेक वन कार्बन, राइट? कार्बन 12 की कोई सवाल नहीं पूछा, जस्ट अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन वेयर कार्बन 12 इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड, that one relative atomic mass unit is equal to the 1/12 mass of a carbon 12 atom. And all other elements that you see in the periodic table, कोई भी एलिमेंट उठाएं and tell me its mass. आप कैल्शियम ले लें. कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में कैसा होता है? 40/20. ठीक है. नाउ दिस 40 इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम. And all other elements, all of them, the 118 elements that are there in the periodic table, they are all measured relative to the mass of a carbon 12 atom. And since these are ratios, the relative atomic mass has no units.
अब हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल हैज अ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 1। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो, हाइड्रोजन इज 1, मीनिंग कि अगर 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे दे वुड हैव एग्जैक्टली द सेम मास एज अ कार्बन 12 एटम। तो वी आर जस्ट यूजिंग इट एज ए कंपैरेटिव, एक कंपैरिजन के लिए, आपने कंट्रोल के लिए हमने एक एलिमेंट को ले लिया कार्बन 12 को। एंड हेंस relative masses are not like the actual masses। अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, डू यू थिंक कि प्रोटॉन का मास असल में भी 1 है? आईजीसीएसई नो लेवल्स में वी टीच रिलेटिव मास। रिलेटिव मास का मतलब होता है कि आपस में इनमें कितना फर्क है। फॉर एग्जांपल, आप और आपकी सिबलिंग में 1:2 का फर्क है। असल में आपकी एजेस कुछ और होंगी, आप शायद 24 ईयर्स के हो और आपका जो छोटा भाई है दैट इज 12 ईयर्स ओल्ड। लेकिन मैंने आप लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे दिया? मैंने रिलेटिव मास किसी को बताया कि 1:2, ठीक है, लाइक द अदर सिबलिंग इज लाइक हाफ देन यू एंड you're like double than him। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ हैविंग अ रिलेटिव मास ऑफ 1:1 का मतलब क्या है कि दोनों का जो भी मास है सेम है। अब असल में मास आप आगे जाके पढ़ोगे, वो इलेक्ट्रॉन का आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन हैज अ मास ऑफ 9.31 इंटू 10⁻⁻31। और आगे जाके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास ही पढ़ोगे विच इज अराउंड अबाउट 1.67 इंटू 10⁻⁻27। यू डोंट हैव टू मेमोराइज दीज वैल्यूज राइट नाउ, दिस इज फॉर ए लेवल्स। असल में इनका एक्चुअल मास ये है। relative mass is just giving you a comparison that both protons and neutrons are having equal mass। और इलेक्ट्रॉन्स का असल में मास 1/1840 नहीं है कि आप, अगर कोई आपसे मास पूछे इलेक्ट्रॉन का, आप 1 को डिवाइड कर दो 1840 से, नहीं। दिस इज जस्ट टेलिंग यू कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भी मास है उससे 1840 टाइम्स बस छोटे हैं। अब मुझे नहीं पता कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास क्या है, लेकिन मुझे रिलेटिव मास से, रिलेटिविटी से पता लग रहा है दैट इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली 1840 टाइम्स स्मॉलर देन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आप अपने भाई से 3 गुना छोटे हो। अब मुझे नहीं पता आपके भाई की क्या है, आई जस्ट नो रिलेटिव मास आप लोगों का ये है कि यू आर जस्ट लाइक 3 टाइम्स स्मॉलर देन हिम। Charges actually, that proton is positively charged, electron is negatively charged, and the neutrons are neutral। यहाँ तक क्लियर हो गया? Okay, so atomic number is also defined as the number of protons in the nucleus of an atom। Mass number is the sum of the number of protons and neutrons in the nucleus of an atom। और फिर आगे हम अभी isotopes को डिस्कस करते हैं। Let me show you that how are we going to explain these। Now let's say, can anyone tell me any element? Quick. Carbon. Carbon। अब कुछ पीरियोडिक टेबल्स में स्टूडेंट्स कहते हैं सर 12 ऊपर लिखा होता है, किसी में 12 नीचे लिखा होता है। आप एक सिंपल चीज याद रखो, द लार्जर नंबर इज ऑलवेज द मास, राइट? तो कार्बन आपने जैसे कहा, अब कार्बन का जो सिंबल है दैट इज व्हाट, सी। असल में इस सी का मतलब क्या है और इसका नेम क्या है? कार्बन। कुछ के लैटिन नेम्स भी होंगे, फॉर एग्जाम्पल आयरन की जगह Fe लिखा हुआ बिकॉज आयरन इन लैटिन मीन्स फेरम, ठीक है। और कॉपर में अगर आप देखो, कॉपर की जगह Cu लिखा हुआ है बिकॉज कॉपर का लैटिन नेम इज क्यूप्रम, ठीक है। अब ये 6 क्या क्या चीज़ है? ठीक है, 6 के बहुत सारे नाम है। 6 इज ऑल्सो नोन एज दी एटॉमिक नंबर, ठीक है। एंड एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। These are the number of protons and all elements in the periodic table are arranged according to the proton number। इस 6 को हम Z से भी डिफाइन करते हैं। व्हाट इज Z? Z का मतलब भी एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर होता है। वेर एज दिस 12, 12 किसकी इक्वल है? 12 इज नोन एज द mass number। You can call it the relative atomic mass as well। This is also known as the relative atomic mass। This is also known as the nucleon number। न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन अलग है, न्यूक्लियॉन नंबर न्यूक्लियस से निकला है। क्योंकि मास सारा का सारा एटम का कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। ऑर्बिट्स तो समझो ना होने के बराबर है। ऑर्बिट्स में है क्या? ऑर्बिट्स में वी हैव द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स तो बेचारे न्यूक्लियस से 1840 टाइम्स स्मॉलर है। ऑर्बिट्स का अपना तो कोई मास है ही नहीं, ठीक है। इट्स लाइक ने टू नेग्लिजिबल। एटम का 99.9999% मास जो है दैट इज ऑल इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हिच हैव अ रिलेटिव मास ऑफ 1 1। और इसको हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी यूज द सिंबल ए फॉर मास नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर या रिलेटिव एटॉमिक मास, एंड वी यूज द सिंबल जी फॉर प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। यहाँ तक क्लियर? दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ साइंटिफिक नोटेशन।
Now, can someone tell me how will we calculate the neutron? कितने न्यूट्रॉन्स है इसमें? Sir, sir, 6. 12 minus 6. 12 minus 6 exactly. मतलब ये yes, sir, फॉर्मूला minus. a minus z. This is how we find the number of neutrons. और इस पूरे को हम क्या कहते हैं? दिस इज ऑल नोन एज अ साइंटिफिक नोटेशन. अगर एग्जामिनर कहीं वर्ड यूज करता है दैट यू हैव टू राइट डाउन द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एनी एलिमेंट, तो यू आर गोइंग टू यूज दिस सिंबल ए जी, उसके न्यूट्रॉन्स लिखने. कुछ में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि चार्जेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं फिर आगे जाके. ओके, मूविंग ऑन. और वन थिंग अबाउट माई क्लास, यू डोंट हैव टू ओपन योर नोट्स, यू डोंट हैव टू राइट डाउन एनीथिंग. जितनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस नोट्स यहाँ पर लिख रहे हैं, आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, ऑटोमेटिकली जैसे क्लास एंड होती है वो आपके साथ वैसे ही शेयर हो जाएंगे. ऑल ऑफ माई प्रीवियस प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट्स, नोट्स, रिसोर्सेज, टॉपिकल वर्कशीट्स, कुछ भी है, यू डोंट हैव टू नोट डाउन एनीथिंग. ठीक है, सिर्फ सुने एंड दैट विल बी लाइक मोर देन इनफ. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. ओके. तो हम कहाँ से? मूविंग ऑन. ओके. फिर एक चीज है आइसोटोप्स. ठीक है. Isotopes is another term which is known as they are the atoms of the same element containing the same number of protons and electrons but having different number of neutrons. For example, कार्बन की ले लेते हैं. एक होता है कार्बन 12 और दूसरा एक एग्जिस्ट करता है इसका आइसोटोप कार्बन 14. अब दोनों के प्रोटॉन नंबर्स, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन सेम है. दे हैव द सेम प्रोटॉन्स, दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फर्क क्या है? दे हैव द डिफरेंट मास एंड दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इस वाले कार्बन के कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 6. और इस वाले कार्बन के कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 8. दे हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, दे हैव डिफरेंट मास, बट दे हैव द सेम प्रोटॉन्स एंड दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज द डेफिनेशन जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ये याद रख लें. ठीक है, बल्कि वो पिछली वाली मिस कराओ, ये वाली नहीं करनी. ये थोड़ी छोटी है. दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन जो आपके मार्क्स स्कीम में होती है, एग्जामिनर ने जो दी है मैंने यहाँ लिखी हुई है. व्हाट इज इट? वेट एवरेज mass of an atom of an element taking into account the abundance of all the isotopes of that element. It is measured as a ratio of 1/12 of the mass of an atom of carbon 12. थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, बट बुक के अंदर भी कुछ सिमिलर लिखी हुई है. बट दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास. अगर कोई एटम है तो उसके मास को हम कहते हैं ए आर, रिलेटिव एटॉमिक मास. जैसे कि कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है जी? 40. लेकिन अगर हम आगे जाके देखेंगे, अगर किसी मॉलिक्यूल का मास है तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, एम आर. जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड का एम आर क्या है? तो कैल्शियम 40 प्लस ऑक्सीजन 16 मास, तो इनका कंबाइन जो आएगा दैट विल बी द आंसर फॉर द एम आर. सो एम आर मीन्स मॉलिक्यूलर मास, ए आर मीन्स atomic mass. Is everything clear till here? Anyone has any questions? Let me know quick. Let me Sir, show what you. is the meaning of AR? What is the meaning of AR? Yes, sir. एटॉमिक मास. जो आपको पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स के मास दिए हैं वो सारे एटम्स है ना, तो उनको हम एटॉमिक मास कहते हैं, ए आर. ए आर इज द टर्म यूज्ड फॉर एटॉमिक मास. बाकी अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो एन मॉलिक्यूल वुड कंटेन देन लाइक मॉलिक्यूलर मास, उसका एक अलग से मॉलिक्यूलर मास एंड स्टफ होगा. ठीक है. Atoms make up everything. लेट मी शो Sir, यू. हाँ जी. sir, different isotopes will have different mass number as well. यस, डिफरेंट मास नंबर एज वेल एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर एज वेल. Oh, एक और एग्जांपल देखो ना, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. ठीक है. सेम क्या क्या है? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स भी दोनों के 17 है, इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों के 17 है. ठीक है. यस अशर एंड द अदर Sir, what is the meaning of isotopes? isotopes are the atoms of the same element chlorine having same number of protons and electrons but different number of neutrons and mass number. Got it? Oh, एक और एग्जांपल ले लें. जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन में दोनों में प्रोटॉन्स कितने? 17 17. और दोनों में इलेक्ट्रॉन्स भी 17 17 है. एक याद बात रखें कि एटम में प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन्स.
इन ऑल एटम्स प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन्स। अगर 17 प्रोटॉन है दोनों में, तो दोनों में 17 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। डिफरेंट क्या है इन दोनों आइसोटोप्स में? मास। एक का मास 35 है, दूसरे का मास 37 है। न्यूट्रॉन्स भी तो फर्क है। न्यूट्रॉन्स कैसे फर्क है? अगर आप कैलकुलेट करोगे दोनों के न्यूट्रॉन्स, पहले के क्या आएंगे? 35 माइनस 17 क्या आता है आंसर? 18 आई गेस, देख लेना। और दूसरे के क्या आते हैं? 37 माइनस 17 20। तो एक के न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं 18 और दूसरे के आ रहे हैं 20। तो मास भी फर्क था, 35 एंड 37, और न्यूट्रॉन्स भी दोनों के फर्क हैं। एक का 18 है और दूसरे में 20 न्यूट्रॉन्स हैं। इज इट नाउ क्लियर व्हाट आर आइसोटोप्स? Yes, sir. लेकिन हैं दोनों एक ही एलिमेंट के, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एंड दैट सेम एलिमेंट इज व्हाट? क्लोरीन ओवर हियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। Okay, now let's watch a quick video as well for a summary. Then we'll move on to calculating the relative atomic mass as well. Let me show you that. Uh, okay. Thing. But what makes up atoms? Protons, electrons, and neutrons. There are 118 different kinds of atoms, which are each the smallest part of an element. If we observe elements like gold, carbon, and oxygen, we can see that they have very different properties that don't look or act the same. But why are they so different? Well, it comes down to what's inside their atoms. As you can see here, atoms are made of just 3 types of tiny particles called protons, electrons, and neutrons. So can someone tell me the charges of electron, proton, and neutron, and also their relative mass? Sir, Yes. electrons have a charge of -1, Mm-hmm. protons have a charge of +1, neutrons do not have any charge, and the relative atomic mass of proton and neutron is 1, and of electron it's 1 divided by 1840, the relative atomic mass. Relative, exactly. Relative mass. Relative atomic mass नहीं, ये सब atomic particles है. So just Oh relative. yes, sorry, relative mass. Good job, good job. And each of these tiny particles does something special. For example, it's the number of protons inside an atom that makes each element different. If we look at the periodic table, the first element, hydrogen, has 1 proton. The second element, helium, has 2 protons. And the third element, lithium, has 3 protons. This goes on all the way up to the 118th element, oganesson, which has, that's right, 118 protons in. So in the periodic table आप देख सकते हो कि हमने जो एक साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी थी अभी, जिसने कहा था कार्बन की करके दें सर. All of these elements are also arranged in the order of their atomic and proton numbers. आपको जितने भी यहाँ पे elements नजर आ रहे हैं, they are all increasing order में protons में. जैसे for example you can start with hydrogen 1, then helium 2, फिर lithium है, beryllium 4 है, boron is 5, carbon is 6. And I recommend all O levels and iGCSE students कि 20 तक memorize कर लो. 20 एलिमेंट्स आप मेमोराइज कर लो, आपका पेपर इतना आसान हो जाएगा, बजाय ये कि वो बंदा कैम्ब्रिज और एग्जाम का प्रेशर ले, बारह पीरियोडिक टेबल देखे, भूल जाए, मिक्सअप कर दे. मेमोराइज. आज बैठ के आप 20 एलिमेंट्स की मेमोराइज कर लो, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनका मास, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या क्या है, क्या सीक्वेंस है, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक कौन किस ग्रुप में आ रहा है. वंस यू नो ऑल ऑफ दैट, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी, इफ यू जस्ट मेमोराइज द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. लेकिन अभी Sir, हमने. I have a question. यस. The same group have same chemical properties, right? Is it? गुड जॉब. हाँ. Or it's according to the period? यस. ठीक है. आइसोटोप्स की एक खास बात आपने अच्छा वो मेंशन कर दी है. आइसोटोप्स जो होते हैं, दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ व्हाई इज दैट? बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ Same इलेक्ट्रॉन. number of electrons.
लेकिन दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाई? क्योंकि because मैथ of their डिफरेंट है। mass number. different mass number. एग्जैक्टली exactly. मैथ्स डिफरेंट होगा तो सोचो उसकी डेंसिटी, उसका कलर, उसका हैवीनेस, सब कुछ फर्क हो गया ना। फिर तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट तो और मेल्टिंग पॉइंट तो उसी का ज्यादा होगा जिसका ज्यादा मास है। क्लोरीन 37 का ज्यादा होगा, क्लोरीन 35 का कम होगा, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट मास नंबर दैट इन टर्न्स गिव्स टू डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल। बट इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है, तो वो किस तरह बॉन्ड करेंगे, किस तरह उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, किस तरह वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, किस तरह गेन करेंगे, किस तरह पार्टिसिपेट करेंगे, एंड दे वुड बिहेव विद अदर एटम्स एज वेल, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। क्या वो कोवेलेंट बॉन्ड करेंगे, क्या वो मेटालिकली बॉन्ड करेंगे, आयोनिकली बॉन्ड करेंगे, डेटिवली बॉन्ड करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी सेम है, जो हम आगे पढ़ेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड कैसे हैं, इफ दैट्स द सेम फॉर बोथ ऑफ द आइसोटोप्स, देन दे वुड ऑब्वियसली हैव द सेम नंबर, सेम टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल। केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिएक्टिविटी, रिएक्शन स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, ये सारी हैं केमिकल प्रॉपर्टी। किस तरह का रिएक्शन है, कितनी तेजी से रिएक्टिविटी है, कौन जल्दी रिएक्ट करे, वो सब कुछ इनका फिर आपस में सेम होता है, जितनी भी क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, जितने भी कार्बन के आइसोटोप्स हैं। बट कभी किसी ने सोचा नहीं कि अगर कार्बन भी दो टाइप्स के हैं, कार्बन 12, कार्बन 14, दोनों क्यों नहीं है पीरियोडिक टेबल में? किसी ने नहीं पूछा। अगर क्लोरीन मैंने आपको भी दो टाइप्स के बताए थे, एक क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37 है, दोनों लिखने चाहिए थे ना पीरियोडिक टेबल में। इस तरह तो कार्बन भी 4-5 किस्म के हैं, ब्रोमीन 3 किस्म के हैं, हाइड्रोजन 4 किस्म के हैं, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम एंड सो ऑन, वो चार तो 4 दफा हाइड्रोजन होते हैं पीरियोडिक टेबल में। फिर तो आप सोचो कि आपका पीरियोडिक टेबल कोई 600-700 Sir, एलिमेंट्स का बन जाता, राइट? sir, बट यस बताओ। sir, is it like because the percentage of the isotope of the chlorine 35 is the यस, greatest? एग्जैक्टली, बिल्कुल। साइंटिस्ट ने फिर सोचा करें क्या। अब क्लोरीन दोनों तो नहीं लिख सकते, ब्रोमीन तीनों तो नहीं लिख सकते, उन्होंने पहले देखा कि किसकी कितनी अबंडेंस है, विच इज मोर कॉमन अराउंड द ग्लोब ऑन योर अर्थ, ठीक है, कौन सा कार्बन टाइप कॉमन होता है आइसोटोप, उस हिसाब से देन दे केम अप विद डिफरेंट relative atomic masses। फिर उन्होंने एवरेज एटॉमिक masses निकालना शुरू किए। The relative atomic mass of each element is calculated from the mass number and the relative abundances of all the isotopes of a particular element. The equation below is used where the top line of the equation can be extended to include the number of different isotopes of a particular present. अब फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन दो टाइप्स के थे, क्लोरीन 35 एंड द अदर वन वाज क्लोरीन 37। दोनों नहीं लिखे पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल पे इनका एवरेज लिखा गया, क्योंकि ये कहा जाता है दैट क्लोरीन 37 की ओवरऑल वर्ल्ड में अबंडेंस कितनी है, 25%, whereas क्लोरीन 35 की लाइक समवन मेंशन्ड 75%, बहुत ज्यादा अबंडेंस है। इस हिसाब से दे देन कैलकुलेटेड द एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि इंक्लूड तो एक ही दफा करना है क्लोरीन को, ये सारे नहीं कर सकते, बहुत बड़ा पीरियोडिक टेबल बन जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि पहला जो था क्लोरीन 35, उसके मास को मल्टीप्लाई किया उसकी परसेंटेज से, प्लस जो दूसरा क्लोरीन था उसका मास लिया एंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज, और डिवाइड कर दिया सम ऑफ परसेंटेजेस से विच इज ऑलवेज 100। आंसर आया आपके पास 35.5। एंड राइट नाउ अगर आप पीरियोडिक टेबल ओपन करोगे तो क्लोरीन का मास ना 35 है ना 37 है, बल्कि इन दोनों आइसोटोप्स का एवरेज निकाला हुआ विच इज 35.5. This is how we calculate the relative atomic mass. You take the percentage of isotope A, multiply it by mass, plus you take the percentage of isotope B and multiply it by the mass of isotope B. अब यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओके यू गाइस सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, एंड लेट मी नो द आंसर। देखते हैं कौन सबसे पहले ये सवाल करता है। एवरीथिंग इज गिवन टू यू, you just have to use the formula and calculate the relative atomic mass. Mass multiplied by the percentage of isotope 1 plus mass of the isotope 2 multiplied by its percentage as well, और फिर divide by 100 करें। Let's see क्या आंसर आता है सबका क्विकली। चैट बॉक्स के अंदर अपने आंसर्स लिखते जाना है, माइक ओपन कर लें। कम ऑन, यू गाइस हैव ओनली 30 to 40 seconds। सर मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला।
कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास, जो भी हमने पीछे किया ना, ये वाला फॉर्मूला, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, आपको डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, और साथ आपको परसेंटेज भी दी हुई है। कैलकुलेट करें, लेट मी नो व्हेन डन। सर मेरा 48.56 आ रहा है। नो, जिसने 85.56 लिखा है, गेस ये सही है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक थी, आपको दोनों आइसोटोप्स की परसेंटेजेस तो गी हुई है, बट कैन समवन टेल मी दोनों आइसोटोप्स का मास क्या गिवन है? 40 यस, किसका आंसर आया था 48.5? कैन यू टेल मी व्हाट आर द masses ऑफ बोथ ऑफ द आइसोटोप्स? आपको मैथ्स गिवन ही नहीं है, मैथ्स हमने अलग से पहले निकालना था। एग्जैक्टली किस तरह से? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन करके आपने पहले इन दोनों आइसोटोप का मैथ्स निकालना है। साम, कैन यू टेल मी पहले आइसोटोप का मैथ्स क्या आ रहा है ऐड करके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? Sir, the first one is 85, and the second one is 87. ओके, तो सबसे पहले आपने मैथ्स निकाला, बिकॉज रिमेंबर मैथ्स नंबर, mass of an atom is always the sum of the protons and the neutrons. Once you calculate the mass, अब आप इनको इनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो। जो 85 मास वाला आइसोटोप था उसको आप मल्टीप्लाई करो विद इट्स परसेंटेज, देन जो प्लस कर दो दूसरा जो आइसोटोप था जिसका मास आया 87, मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज, और डिवाइड कर दो आप बाय 100, तो यू विल गेट योर आंसर विच इज 85.6। समझ आ गया सबको? लेट मी नो वरना मैं दोबारा बताऊं। ऑल क्लियर एवरीवन? अब्दुल हफीज, अरीशा, अशर, दुआ, मायरा, मिबसाम? Yes, sir, all clear. ठीक है, गुड। This was how we calculate the relative atomic mass. Let me show you as well. Uh, yeah. In this video, we are going to learn how to calculate the relative atomic mass of an element from its isotopic abundances. If we consider carbon, its relative atomic mass is very close to 12 atomic mass units. This is because, in nature, 99 atoms out of 100 atoms of a carbon sample are carbon-12 isotopes. Another way of saying this is that carbon-12 has a 99% isotopic abundance. However, not all relative atomic masses of elements are weighted in this way. Chlorine, for instance, exists as two isotopes, chlorine-35 and chlorine-37. How many protons and neutrons do you think each chlorine isotope has? Remember, the mass number for an isotope is equal to the number of protons it has plus the number of neutrons. Pause and select from one of the following options. Use the chemical symbols to help you work this out. Both chlorine-35 and chlorine-37 have 17 protons, but the chlorine-35 isotope has 18 neutrons, whereas the chlorine-37 isotope has 20 neutrons. The answer was A. Did you get it right? In nature, out of 100 atoms of chlorine sample, 75 of those atoms are chlorine-35 isotopes, and 25 of those atoms are chlorine-37 isotopes. For you to be able to work out the relative atomic mass for chlorine, you have to multiply the mass number of the isotopes with its abundance, percentage, and add these products together. This gives the total mass number of the isotopes. Using this data, can you calculate the total mass of chlorine isotopes using their abundance and mass numbers? Pause, think, choose, and continue when you're ready. The answer is B.
you have to multiply a 75% abundance of the chlorine-35 isotope by its mass number 35. You then have to multiply a 25% abundance of the chlorine isotope by its mass number 37. When added together, this gives a total of 3,550. The final step in calculating the relative atomic mass is to divide your answer by 100. This is because the abundances are given as percentages. This means chlorine has a relative atomic mass of 35.5. Here's a challenge. From the following data, calculate the relative atomic mass of uranium. Pause and continue when ready. Make sure you write your working out down as you do the calculation. The correct answer and working out is displayed on the screen. Remember, you then have to divide this value by 100. That gave you 237.99. Did you get it right? In summary, the relative atomic mass is the average weighted mass for the isotopes of a particular element. To calculate this, you need to multiply the relative abundances by the mass number of the isotope, add these products together for each isotope, and then divide the total by 100. And that's how you calculate the relative atomic mass of any element from its isotopes in the periodic table. And that is all for